So in this question, what the question is asking you, a 68-year-old male patient diagnosed with sepsis is orally intubated on mechanical ventilation. Which nursing action is most important? In this case, which nursing action is the most important that the question is asking you, and patient is orally intubated and patient is on mechanical ventilation. दैट इज द कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में दी गई है और उसके अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच नर्सिंग एक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट. ऑप्शंस आर यूज द ओपन सक्शनिंग टेक्निक, ऑप्शन बी द एडमिनिस्टर्ड मॉर्फिन फॉर डिस्कम्फर्ट, ऑप्शन सी लिमिट द नॉइस एंड क्लस्टर केयर एक्टिविटीज, एंड ऑप्शन डी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 degree. So in case of any type of patient who is orally intubated and mechanically ventilated, always remember the open suction technique is not beneficial. The most important and the very good technique, that is closed suctioning. When you are performing closed suctioning, that is the beneficial for you. Open suction technique is not beneficial. So always go with the closed suction technique, not with the open suction technique. So this one is the not right one. Administered morphine for discomfort. So when patient is admitted and mechanically ventilated with oral intubation, at that time morphine will not help you. We will use the muscle relaxant drug, we will use the sedative, other sedative analgesic drug. So it is for the conscious patient, not for this patient. So this is also not helpful. Limit the noise and cluster care activity. So patient is already sedated, already unconscious in state, and patient is having the mechanical ventilation, so there is no issue with cluster care activity or any type of noise. Patient is not a conscious patient, so this is not any type of problem. The right answer is a D. Elevate the head of the bed is 30 degree, because the patient who is on mechanical ventilation and especially orally intubated patient having higher chance for the development of VAP, or we can say ventilator associated pneumonia, high chance of development of ventilator associated pneumonia. So to prevent the VAP or to prevent the ventilator associated pneumonia, the patient should be follow the VAP bundle, and in VAP bundle the one option is you should elevate the bed 30 to 45 degree angle. So आपको head of the bed should be elevated 30 to 45 degree angle. This should be maintained. दूसरा पॉइंट जो हम बात करते हैं यहाँ पे, ओरल केयर शुड बी डन विथ क्लोरेक्सिडिन, दैट इज द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस. फोर्थ पॉइंट, डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस. एंड फिफ्थ पॉइंट, सेडेशन वोकेशन मीन्स बीच में जो सेडेशन चल रहा है उसको स्टॉप करना है. सो दीज आर द 5 पॉइंट विच कम अंडर द वेब बंडल. हेड ऑफ द बेड शुड बी एलिवेटेड, द प्रॉपर ओरल केयर विथ क्लोरेक्सिडिन, डीवीटी प्रोफाइलेक्सिस, स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस, दैट इज पेंटाप्राजोल हम यूज करते हैं, लाइक जो आपकी H2 ब्लॉकर ड्रग्स आती है. एंड द लास्ट वन इज सक्शन, द सेडेशन वोकेशन शुड बी फॉलोड. So these all point are come under the VAP bundle, and to prevent the ventilator associated pneumonia, VAP is the ventilator associated pneumonia, the person should follow this bundle, and the right answer of this question is the D is the right answer. Elevate the head of the bed at the 30 to 45 degree angle. So the right answer of this question is D is the right answer. In this question, what the examiner is asking you, the primary benefit of PEEP during mechanical ventilation is. Options are A, improve the elimination of CO2, option B, improve the venous return and cardiac output, option C, the prevention and reversal of alveolar collapse, or D, the reduction in peak inspiratory pressure. So what the question is asking you, that is the important point. Question is asking you about the PEEP. First thing is that what is PEEP? PEEP is the positive and expiratory pressure. PEEP is the positive and expiratory pressure. And the PEEP should be, you should maintain a good PEEP
to prevent the collapse of alveoli. What is the PEEP? PEEP is the positive and expiratory pressure. एक्सपिरेशन एंड होने के बाद में हमारे एल्यूलाइज के अंदर जो प्रेशर प्रेजेंट रहता है, दैट प्रेशर इज नोन एज द PEEP प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, इन ए नॉर्मल एडल्ट पर्सन, ड्यू टू द रेजिडुअल volume after forcefully expiration, still we have a few amount of air which present inside our lung. That is the residual volume. That residual volume is responsible for the maintenance of this PEEP. But in ventilator patient there is no mechanism is there. Ventilator क्या करेगा, सारी एयर को बाहर निकाल के अंदर डालेगा. तो we have a option like PEEP in the ventilator settings है. You set the PEEP and it should be set approximately at the 5 to 15 mm of Hg, so your alveoli will not collapse after expiration. एक्सपिरेशन के बाद में एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम पेशेंट में क्या रखते हैं, PEEP प्रेशर मेंटेन करते हैं. यू मेंटेन अ PEEP इन बिटवीन 5 to 15 mm of Hg. And what the benefit of this PEEP? This PEEP will prevent you will help you to prevent the collapse of alveoli. एल्यूलाई के कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम पेशेंट में क्या रख रहे हैं, यहाँ पे PEEP प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं. सो ऑप्शंस क्या क्या लिखा है, इम्प्रूव द एलिमिनेशन ऑफ CO2. नो, इट विल नॉट इम्प्रूव द एलिमिनेशन ऑफ CO2, इट इम्प्रूव द ऑक्सीजन गैस एक्सचेंज. ऑक्सीजन एक्सचेंज को ये क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. ऑप्शन नंबर बी, improve the venous return and cardiac output. No, it will decrease the venous return and decrease the cardiac output. When we use the higher PEEP, always remember, if we are using a higher PEEP, that will decrease the venous return. Venous return will be decreased due to the blood accumulation in the lungs. Alveoli will dilated and more blood will be accumulated in the alveoli. So decrease venous return as well as decrease the cardiac output. आपका cardiac output भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे decrease हो जाएगा. So these 2 points, decrease venous return and decrease cardiac output, may lead to decrease in the blood pressure. Person will have decrease in BP. So hypotension will be there. Patient में क्या देखने को मिलेगा, hypotension आपको देखने को मिलेगा अगर आप high PEEP रखेंगे. If you set the PEEP at the higher level, your person will suffer with the हाइपोटेंशन. पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन मिलेगा. सो दिस इज द नॉट राइट आंसर, दिस इज नॉट द राइट आंसर. नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ एल्यूलार कोलैप्स. ऑब्वियसली एक तो एल्यूलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगा, एंड द सेकंड थिंग, इफ एनी एल्यूलाई इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, दैट प्रेशर विल हेल्प यू टू अगेन रिवर्स द एल्यूलाई. एल्यूलाई को फिर से क्या करेगा, इन्फ्लेट कर देगा. सो दैट विल हेल्प यू. The PEEP pressure will help you to prevent the collapse of alveoli and the reduce in peak inspiratory pressure. So it will not done by this one. So right answer is the C. Correct answer यहाँ पे क्या होगा, तो आपका correct answer होगा C is the right answer. इस क्वेश्चन का right answer हम बात करेंगे तो क्या हो गया, C is the right answer. The prevention and the reversal of alveoli. C is the collapse right answer. So this question right answer is the C. Prevention and the reversal of alveolar collapse, C. And the complication of higher PEEP are hypotension is the complication. Hypotension is the complication to keep the PEEP high. So PEEP should not be more than 15 mm of Hg and it should not be less than 5 mm of Hg. If it is less than 5 mm Hg, then alveoli will collapse. If it is more than 15 mm of Hg, then alveoli will over dilated. That may lead to more and more fluid will be accumulated in the lungs. That may lead to decrease in cardiac venous return and cardiac output and lead to hypotension. So this point you have to remember and keep in your mind. So this question is the right answer. C is the right answer. In this question, what the question is asking you, a client is intubated and receiving mechanical ventilation. The physician has added 7 cm of PEEP to the ventilator setting of the client. The nurse assesses for which of the following expected but adverse effects of PEEP. A. Decrease peak pressure on the ventilator. B. Decrease the temperature from 98 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit rectally. C. Decrease the heart rate from 78 to 64 beat per minute. Or D. Systolic BP decrease from 122 to 98 mm of Hg. So क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपसे पूछ रहा है, इट इज रिलेटेड टू PEEP.
क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पीप प्रेशर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या इसमें पूछा है आपसे, फिजिशियन एडेड 7 सेंटीमीटर ऑफ पीप, मीन्स ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर सेट ए पीप इन एनी पेशेंट and you will see if the PEEP is 7 centimeter or any more reading is there, क्या होगा PEEP प्रेशर बढ़ने से या इंक्रीज होने से। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज PEEP? PEEP is the positive and expiratory pressure, positive and expiratory pressure, positive and expiratory pressure, and it should be from 5 to 15 mm of Hg, in between 5 to 15 mm of Hg. It should not be less than 5 and should not be more than 15, in between the 5 to 15 mm of Hg. Now if you increase the value from 5 above the 5, if you start increasing the PEEP pressure, now if you increase the PEEP, what happen, like at the 5 mm of Hg, alloys is like this is at 5. When you increase till the 7, now the alveoli is more dilated in 7, and if you keep it 10, then it will more and more dilated 10. So when we increase the PEEP, the alveoli will more dilated, and if the alveoli is more dilated, then the accumulation of the blood will be more and more. जब alveoli के अंदर ज़्यादा blood present होगा, that may lead to accumulation of fluid in the alveoli, and you have a decrease venous return as well as decrease in cardiac output. And when cardiac output is decreased, venous return is decreased, that may lead to decrease in blood pressure. So when we are increasing the PEEP, it will decrease the blood pressure. Pressure will be continuously falling due to the use of higher PEEP. That's why we keep the PEEP in a normal range and always assess for blood pressure. Whenever you are placing any patient with PEEP, you should assess the patient for hypotension, you should assess the patient blood pressure. आपको पेशेंट का क्या मेजर करना है, ब्लड प्रेशर या बीपी आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करना है. सो यू शुड असेस फॉर डिक्रीज पीक प्रेशर. नो, temperature is not related to PEEP. Heart rate will increase, not decrease. So it is wrong. Answer is the D. Systolic blood pressure decrease from 120 to 98. BP is falling means PEEP is high, and that higher PEEP is causing the hypotension. So what will be the management of this problem? You should decrease the PEEP को आप क्या करें, डिक्रीज कर दे, आपकी प्रॉब्लम फिर से सोल्व हो जाएगी. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? The right answer of this question is D is the right answer. Systolic BP decrease from 122 to 98 mm of Hg. That is the right answer. That is the D. Right answer of this question is D is the right answer. Okay, moving on the next. अगले पे मूव करते हैं. Next क्या है? In this question, what the question is asking you? In this question, what the question is asking you? The following modes of ventilation may be used for weaning of patients from mechanical ventilation, except when you are ventilating a patient who is on mechanical ventilation, and the question is asking you which mode is used for the weaning, except. So first thing, keep in mind when you are reading any question, keep in mind that words. This is the accept, expect, apart from, not, best. So ये वर्ड जब आ जाते हैं तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है और वहां पे समझना है कि इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स 3 आर द राइट वन एंड 1 इज द रॉन्ग. 1 ऑप्शन इज द रॉन्ग एंड 3 इज द राइट वन. सो ऑप्शंस आर कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन, दैट इज द CMV. Synchronized intermittent mandatory ventilation, SIMV. C. Pressure support, PSV. And D. Assist control ventilation. These are the mode. These are the mode of ventilation are given, and question is asking you which mode is not used for the weaning. Weaning के लिए कौन सा मोड हम यूज नहीं करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है. So which mode is not used for the weaning? कौन सा नहीं होगा वो हम समझते हैं. So
If I am talking about the mode, firstly that is the pressure support. Pressure support में आप देखेंगे all breath will be taken by the patient. यहाँ पे pressure support में patient किस condition में रहेगा? Self breathe. And winning का means भी क्या है कि higher dependency. Patient पहले breathe नहीं कर रहा था, अब हम उनको self breathe कराना start करवा रहे हैं. That is winning. So प्रेशर सपोर्ट मोड में आप विन कर सकते हैं पेशेंट को. आप स्लोली प्रेशर सपोर्ट को डिक्रीज करेंगे और आप विनिंग कर देंगे. बट पेशेंट वहां ब्रीथ करना सेल्फ चाहिए, वो कर रहा है और उससे आपका विनिंग हो जाएगा. SIMB मोड हम पढ़ते हैं SIMB में कि पेशेंट और वेंटिलेटर दोनों मिलके काम करते हैं. व्हेन पेशेंट इज ब्रीथिंग एट दैट टाइम वेंटिलेटर ऑटोमेटिकली स्टॉप द ब्रीथ. And if patient is not breathing at that time, ventilator start the giving breathing. So both work intermittently, and that will be very important in SIMB mode. कि भाई SIMB मोड के अंदर पेशेंट भी ब्रीथ कर सकता है, वेंटिलेटर भी देता है, इसीलिए हम इस मोड में भी विनिंग कर सकते हैं. एंड द SIMB मोड इज नॉन एज द फर्स्ट विनिंग मोड. आपका पहला विनिंग मोड कौन सा है? तो आप आंसर लिखेंगे द फर्स्ट विनिंग मोड इज द SIMB mode. SIMB mode is considered as the first winning mode. Next, in the assist control mode. So in assist control mode, it is the control mode, but it is assisted. In this mode, ventilator is giving all set rate, like you set the rate at the 14 breath per minute. Then ventilator provide all 14 breath. But if the patient is in conscious state, and if the patient is trying to breathe self, अगर खुद से ब्रीथ करने की कोशिश करेगा, in that case ventilator not block the patient effort. वेंटिलेटर पेशेंट के एफर्ट्स को ब्लॉक नहीं करता है, और उस वजह से आपका पेशेंट फॉर एग्जांपल 6 ब्रीथ सेल्फ से करता है, तो टोटल ब्रीथ काउंट कितना मिलेगा? 20 ब्रीथ. एंड पर्सन विल सफर विथ हाइपर वेंटिलेशन एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस विल बी देयर. सो इन असिस्ट कंट्रोल मोड, ventilator is not blocking the patient effort, patient is breathing self also. So वहां भी हम विनिंग करा सकते हैं. जहां पे पेशेंट खुद से ब्रीथ कर सकता है, उस मोड में आप पेशेंट को विन करवा सकते हैं. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द CMB मोड, in CMB mode what happened in controlled mandatory ventilation, the ventilator does not allow the patient to breathe. Ventilator block the patient's effort. Ventilator provide all total breath which you set in the ventilator, and other, if the patient is in conscious state, ventilator does not allow the patient to breathe spontaneously, or self breathe is not allowed in this mode. Ventilator block the patient effort. So patient will have the lung injury, patient will have the diaphragmatic injury in case of CMB mode. So CMB mode के अंदर patient self breathe नहीं कर सकता है. अब जब सेल्फ ब्रीथ नहीं कर सकता है तो विनिंग कैसे पॉसिबल होगा? हाउ वी कैन विन द पेशेंट इन CMB मोड? सो हम CMB मोड में कभी भी पेशेंट को विन नहीं कर सकते. विनिंग इज नॉट पॉसिबल इन द CMB मोड. जो आपका कंट्रोल्ड मैंडेटरी वेंटिलेशन है, उसमें कभी भी विनिंग करना पॉसिबल नहीं होगा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A is the right answer. In case of CMB mode, we are not able to ventilate the patient, not able to win the patient, because this mode is not allowing the patient to breathe spontaneously. That's why the right answer of this question is A is the right answer. CMB mode is not used for the patient winning. And the first winning mode, if somebody asks you, the first winning mode is SIMB mode. Assist control is not the first winning mode. We can win in the assist control. आप विन कर सकते हैं बट करते नहीं है. हम फर्स्ट कौन सा यूज करते हैं? SIMB mode is the most common used mode for the winning in patient with this mechanical ventilation. So right answer of this question is A is the right answer. Correct answer of this question is A. In this question, what the question is asking you, the purpose of adding PEEP to positive pressure ventilation is. What is the purpose to adding PEEP? What is PEEP? First thing, PEEP क्या है? So PEEP is the positive and expiratory pressure. Positive and expiratory pressure. Expiratory pressure. Positive and expiratory pressure. What is positive and expiratory pressure? The pressure which is remain in the alveoli
after expiration, that is the positive and expiratory pressure. And in this condition, why we are keeping this PEEP in positive pressure ventilation? So options are increase FRC, fraction residual concentration and improve oxygenation. B, increase the FiO2 in an attempt to win the patient. C, determine if the patient is in synchrony with the ventilator. Or D, determine if the patient is able to be win. So पहला पॉइंट, PEEP का पर्पस विनिंग के लिए नहीं होता. There is no purpose related to PEEP with winning. So विनिंग वाले ऑप्शंस तो आप पहले ही हटा देंगे. जो ऑप्शन नंबर बी एंड डी में लिखा है कि हम विनिंग के लिए कर रहे हैं, तो नो. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शंस की. ऑप्शन नंबर जो आपका सी बच गया और ऑप्शन नंबर ए बच गया, दोनों की बात करते हैं. सो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है डिटरमाइन इफ द पेशेंट इज सिंक्रोनी. सिंक्रोनी का मीन्स व्हेन पेशेंट एंड वेंटिलेटर बोथ आर in mechanical ventilation and the both are breathing, the patient phase and ventilator phase both should be in parallel fashion. Like ventilator giving you inspiration, the same time patient should have the inspiration. And if the ventilator is in expiratory phase, the patient should in the expiratory phase. If both are in opposite, like patient is inspirating and ventilator is expirating, then the air flow will not possible. एक इधर से बाहर निकाल रहा है, एक इधर से अंदर डाल रहा है, then air will not move in any direction, and person and the ventilator and patient will have the bucking of the ventilator or fighting of the ventilator will be there. So to prevent this condition, the synchronization will be very important, but this will not for the PEEP. PEEP is not help you to this condition. So this is not the right answer. This is not the right answer. This is not the right answer. Then what will be the right answer? The right answer is A. Why A? Increase the fraction residual concentration. Fraction residual concentration का means the amount of the air which is remain in the lungs alveoli, that is functional residual capacity. FRC is the functional residual capacity. यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? Functional residual capacity, that is the FRC, functional residual capacity. So obviously when you add the PEEP, it will increase the residual volume and increase the functional residual capacity. Next thing, if we have the high amount of residual volume in the alveoli, the person will have more better gas exchange. ज़्यादा amount अगर lungs में होगा तो ज़्यादा gas exchange होगा और उससे oxygenation क्या होगा? Improve होगा, increase होगा. So obviously improve the oxygenation will be there. So this will also the right one. So the right answer यहाँ पे क्या होगा? A, increase the functional residual capacity as well as improve the oxygenation. Both will be done by keeping the PEEP high. PEEP को ऐड करने से क्या होगा? फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन जो है आपका ज़्यादा एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा एंड एलुलाई जो है वो कोलैप्स नहीं होगी. सो एलुलाई कोलैप्स को प्रिवेंट करना, कैपेसिटी को बढ़ाना, उसके साथ साथ में ऑक्सीजनेशन को बेटर करना, दीज ऑल आर द पर्पज ऑफ कीपिंग अ PEEP in any type of ventilation. So the right answer of this question, in this question, the right answer is A, increase functional residual capacity and improve oxygenation. A is the right answer. So right answer is A. Then what the question is asking you, the mode of ventilation which allows the patient to breathe spontaneously. The first thing, the mode which is allowing the patient to breathe spontaneously at his or her own respiratory rate and depth between the ventilator breath. Means patient is having a spontaneous breath also as well as the ventilator breath also. दोनों ही टाइप के breath चल रहे हैं. When patient is breathing, at that time ventilator breath is stopped, and when patient is not breathing, at that time the ventilator breath is started. So both type of breathing is there. दोनों ही टाइप का breath चल रहा है. ये कौन से मोड में प्रेजेंट होता है? Options are CMV mode, SIMV mode, assist control mode or pressure control mode. So we know that in CMV mode, when we are discussing about the CMV mode, the CMV mode not allowed the patient to breathe, not allowed the patient to breathe. CMV mode आपके पेशेंट को अलाउ नहीं करता है ब्रीथ करने के लिए. CMV mode does not allow the patient to breathe spontaneous. CMV mode block the patient
respiratory efforts, so it will be the wrong one, it is not the right one. ये correct answer नहीं है. CMB mode does not allow the patient to breathe spontaneously. Next thing, SIMB mode. So SIMB we know that synchronized intermittent mandatory ventilation. वहाँ पे पेशेंट भी ब्रीथ करता है, वेंटिलेटर भी ब्रीथ करता है. पेशेंट ब्रीथ कर रहा है तो वेंटिलेटर सिंक्रोनाइज करके रुक जाता है, और पेशेंट ब्रीथ नहीं करता है तो वेंटिलेटर स्टार्ट कर देता है. इट मीन्स दिस इज द मोड वेयर द पेशेंट इज अलाउड टू ब्रीथ ऑन देयर स्पॉन्टेनियसली. असिस्ट कंट्रोल. इन असिस्ट कंट्रोल मोड वेंटिलेटर नॉट अलाउिंग द पेशेंट टू ब्रीथ. वेंटिलेटर पेशेंट को अलाउ नहीं कर रहा है कि आप ब्रीथ करो, बट वेंटिलेटर के जो एफर्ट्स है उसकी अगर हम बात करें, पेशेंट अगर ब्रीथ करना स्टार्ट करता है स्पॉन्टेनियसली कॉन्शियस होने के बाद में, तो वो उसको मना भी नहीं करता है, बट वो उसको अलाउ भी नहीं कर रहा है. और अलाउ नहीं कर रहा है इसकी वजह से पेशेंट अपने पूरे के पूरे ब्रीथ जो है वो वेंटिलेटर से रिसीव कर रहा है, और जो पेशेंट एफर्ट एक्स्ट्रा लगाएगा वो हाइपर वेंटिलेशन में चला जाएगा, और उसकी वजह से पेशेंट हाइपर वेंटिलेट करेगा. सो इन दिस कंडीशन पेशेंट विल हैव द हाइपर वेंटिलेशन. अगर वेंटिलेटर इसको अलाउ करता तो फिर ये मोड असिस्ट कंट्रोल अगर आपको अलाउ कर रहा होता तो हाइपर वेंटिलेशन नहीं होता. टोटल ब्रीथ काउंट में वो अपने ब्रीथ को माइनस करके पेशेंट के ब्रीथ को ऐड कर देता, लाइक SIMB. बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ टोटल ब्रीथ कौन दे रहा है? असिस्ट कंट्रोल. प्लस अगर वेंटिलेटर के साथ साथ में पेशेंट भी ब्रीथ कर रहा है तो वो उसको कोई मतलब नहीं है, वो भाड़ में जाए, वो अपना ब्रीथ कर रहा है तो करो, मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, मुझे जो काम बोला गया मैं अपना काम पूरा करूंगा. ये आपका कौन बोल रहा है? असिस्ट कंट्रोल मोड बोल रहा है. इसीलिए यहाँ भी वेंटिलेटर तो अलाउ कर नहीं रहा है पेशेंट को अपने ब्रीथ के हिसाब से. और प्रेशर कंट्रोल में तो सारे के सारे ब्रीथ खुद को लेने होते हैं, वेंटिलेटर ब्रीथ एक भी प्रोवाइड नहीं करता है. सो यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत एंड ये भी गलत. राइट आंसर क्या होगा? B is the right answer. What will be the right answer of this question? SIMB, the synchronized intermittent mandatory ventilation. SIMB is the mode which allow the patient to breathe on their own rate and depth with ventilatory breath. B is the right answer. SIMB is the right answer. In this question, what the question is asking you, CPAP and BiPAP modes are usually used. CPAP and BiPAP modes are usually used in. CPAP और BiPAP हम कहाँ यूज करते हैं? In congestion with bronchodilation, dilator and steroid, and to delay the intubation as the winning protocol, or D, all of the above. So firstly, what is the CPAP and BiPAP? So CPAP is the continuous positive airway pressure. What is CPAP? Continuous positive airway pressure, that is the CPAP. Continuous positive airway pressure, which is known as the CPAP. And what is BiPAP? BiPAP is the bilevel positive airway pressure. Positive airway pressure. So these are the two types of mode which come under the support mode. The support mode जो हम पढ़ते हैं, प्रेशर सपोर्ट मोड जो हम पढ़ते हैं, उन सपोर्ट मोड के अंदर दो मोड आप पढ़ते हैं. वन इज द BiPAP एंड द सेकंड वन इज द CPAP. एंड इन दीज टू मोड, इन दोनों ही मोड में हमेशा ध्यान रखिए पेशेंट क्या होना चाहिए? पेशेंट इज ऑलवेज इन कॉन्शियस स्टेट. पेशेंट हमेशा क्या होना चाहिए? कॉन्शियस होना चाहिए. इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस देन आपके पेशेंट के अंदर ये मोड यूज नहीं किया जा सकता है. अनकॉन्शियस पेशेंट को हमेशा कंट्रोल मोड में डालना है. अगर पेशेंट कॉन्शियस है, सेल्फ से ब्रीथ कर रहा बट डिफिकल्टी हो रही है, लाइक अस्थमेटिक पेशेंट, COPD पेशेंट, उन पेशेंट्स के अंदर आप कौन सा मोड यूज करते हैं? सपोर्ट मोड, जहाँ पे CPAP और BiPAP मोड आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज ओनली यूज्ड इन पेशेंट विथ, जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कॉन्शियस पेशेंट है और जो सपोर्ट के लिए यहाँ पे आए हैं, वो खुद से ब्रीथ कर रहे हैं उन पेशेंट्स में. अब ये कहाँ हेल्प करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, इन कंजुगेशन विथ ब्रोंकोडायलेटर एंड स्टेरॉइड. स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर आप दे रहे हैं, लाइक अस्थमेटिक पेशेंट है, COPD का पेशेंट है, उसमें स्टेरॉइड या ब्रोंकोडायलेशन देने से ब्रोंकस डायलेट रहेगा, ब्रीथ इफेक्टिव करेगा. एंड उनके कंजुगेशन में आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हम इनके साथ कर सकते हैं.
इंट्यूबेशन को डिले करने के लिए। लाइक अगर आप सीपेप बाईपेप यूज करेंगे तो पेशेंट उसके साथ वेंटिलेट करके अपने ब्रीथ को अच्छा बना सकता है, एंड अगर आप सीपेप बाईपेप नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और पेशेंट को इमीडिएट इंट्यूबेट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वी कैन यूज दिस मोड टू डिले द इंट्यूबेशन, दैट इज आल्सो द राइट वन। एंड सी एज ए विनिंग प्रोटोकॉल, पेशेंट को विन करने के लिए तो ऑब्वियसली हम विनिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। जब पेशेंट को आपको विन करना है तो वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सो राइट आंसर इसका क्या होगा, टी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव हम ब्रोंकोडायलेटर के साथ में यूज कर सकते हैं। पेशेंट को जो है डिले इंट्यूबेशन के लिए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको यूज करने से इंट्यूबेशन थोड़ा डिले हो जाएगा, आपको इंट्यूबेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेशेंट इसके साथ ब्रीथ कर रहा है, ऑक्सीजन सिचुएशन मेंटेन कर रहा है, तो हमें इंट्यूबेट नहीं करना है। अगर ये यूज नहीं करेंगे तो पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर होगा और इमीडिएट आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्यूबेट करना पड़ेगा। एंड विनिंग तो ऑब्वियसली इससे होता ही है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द डी, all of the above is the right answer. CPAP and BiPAP mode are used in all of the above. So what the question is asking you in the next question, in this question, what is the strategy to prevent ventilator associated pneumonia? Ventilated associated pneumonia is the VAP. Ventilator associated pneumonia is the VAP जिसकी हम बात कर रहे हैं। Ventilator associated pneumonia, that is the VAP. In VAP question is asking you, what is the strategy to prevent the ventilator associated pneumonia, or we can say VAP? Options are, first one, the oral care every 4 hours, the head of the bed elevated 30 to 45 degree unless contraindicated by the patient condition, head of the bed is elevated 10 to 15 degree unless contraindicated by the patient condition, or option number D, allow the family to suction the patient is needed. सो हमें यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करनी है। लाइक इन केस ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया वी यूज अ बंडल दैट इज नोन एज द वेप बंडल। वी यूज अ बंडल दैट इज नोन एज वेप बंडल, एंड दिस बंडल इज हैविंग 5 पॉइंट्स। इन दिस बंडल वी हैव टोटल 5 पॉइंट्स। द फर्स्ट वन इज हेड ऑफ द बेड एलिवेशन, दैट शुड बी 30 to 45 degree. The second thing is oral care with chlorhexidine. Third point, DVT prophylaxis. Fourth point, stress ulcer prophylaxis. And the fifth point is sedation, vocation. So these 5 points is mentioned in the bundle which is known as the wave bundle, and we should follow this bundle. According to this, the option number D is wrong. Option number C जो थर्ड वाला है ये भी गलत है, और इसमें जो आप देखेंगे इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 1 to 2, 2 to 3, कौन कौन सा आपका यहाँ पे राइट होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो हमारा राइट क्या होगा, फोर्थ गलत है, थर्ड गलत है, हमारा राइट होगा 1 and 2। आप ओरल केयर दें प्रॉपर, उसके साथ साथ में पेशेंट का हेड ऑफ द बेड एलिवेट करें 30 to 45 डिग्री एंगल पे, और इसी वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट एंड 1 इज द राइट एंड 2 इज द राइट। सो यहाँ पे मल्टी रेस्पॉन्स आपको पूछा है, इसमें ऑप्शंस दिए यहाँ पे ABCD, जैसे ए में लिखा है 1 and 3, बी में लिखा है 2 and 3, सी में लिखा है 1 and 2 एंड डी में लिखा है 1, 3 and 4। और इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू दैट द राइट वन इज द 1 and 2, थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, C is the right answer. So answer of this question is the C is the right answer. You should perform the oral care every 4 hourly, as well as the head of the bed should be elevated 30 to 45 degree unless the contraindicated by the patient condition. So the right answer of this question is C. 1 and 2 is the right answer. 1 and 2 दोनों ही आपको फॉलो करना है according to the wave bundle. So the C is the right answer. In this question, what the question is asking you, one of the following modes of the ventilation reduce the work of breathing by overcoming the resistance created by the ventilator tubing. By resistance created by the ventilator tubings.
सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मोड है जो आपके वर्क ऑफ ब्रीथिंग रिड्यूस करता है वेंटिलेशन में वर्क ऑफ ब्रीथिंग को बाई ओवरकमिंग द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय द वेंटिलेटर ट्यूबिंग। ट्यूबिंग का जो रेजिस्टेंस होता है उस पर ओवरकम करके आपके वर्क ऑफ ब्रीथिंग के एफर्ट्स को कम करता है। कौन सा मोड जो है आपके वर्क ऑफ ब्रीथिंग को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता है। तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग को रिड्यूस कौन करेगा? व्हेन यू आर ब्रीथिंग स्पॉन्टेनियसली एंड यू हैविंग ए डिफिकल्टी, वी यूज अ मोड विच डिक्रीज योर डिफिकल्टी। लाइक इन पेशेंट विथ अनकॉन्शियस स्टेट, वहां पे तो पेशेंट सेल्फ ब्रीथ कर ही नहीं रहा है। सो व्हेन पेशेंट इज नॉट ब्रीथिंग विथ सेल्फ, वहां कोई इश्यू है नहीं, वहां पे तो सारा ब्रीथ वेंटिलेटर दे रहा है, तो पेशेंट का कोई वर्क ऑफ ब्रीथिंग है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन CMB मोड, दिस इज द CMB मोड, दिस इज द कंट्रोल मोड एंड 100% वेंटिलेशन इज गिवन बाय द वेंटिलेटर। सो नो वर्क ऑफ ब्रीथिंग इज देयर। In assist control mode, it is also control mode and all the breath is given by the ventilator. So here also no work of breathing is there. In SIMB mode, the all breath will be given by the ventilator if patient is not breathing. अगर patient breathe नहीं भी करेगा तो सारे के सारे breath कौन देगा? Ventilator. And if patient is breathing, then ventilator will stop. So यहाँ पे ventilator आपके according काम कर रहा है, वो आपके breath को support नहीं कर रहा है, वो आपके ब्रीथ के ऊपर काम कर रहा है कि आप ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ यू आर ब्रीथिंग देन वेंटिलेटर इज स्टॉप्ड, इफ यू आर नॉट ब्रीथिंग द वेंटिलेटर विल स्टार्ट। सो ये भी SIMB मोड जो है वो आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? द प्रेशर सपोर्ट मोड। प्रेशर सपोर्ट मोड आपको क्या करता है? सपोर्ट करता है। इट इज लाइक दैट कि अ बलून विच इज फिल्डेड विथ 50% एयर। आपको एक बलून दिया जिसमें पहले से ही 50% एयर भरी हुई है और एक दूसरा बलून दिया जिसमें 0% एयर है। आपको बोलोगे दोनों को फुल करो, तो किसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे? जिसमें बलून में एयर क्या है? 0% है। सो 0% बलून रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, मोर पावर, मोर रेजिस्टेंस विल बी देयर। एंड 50% भरा हुआ है तो आपको 50% ही भरना है, आपको कम काम करना पड़ेगा। प्रेशर सपोर्ट मोड वही काम कर रहा है। आपकी एल्यूलाई को कुछ प्रेशर्स इस मोड से मिल रहा है, इससे वो थोड़ी इन्फ्लेटेड है, थोड़ा बहुत आप एयर लेके इन्फ्लेट कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए आपका ब्रीथिंग जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन विच मोड डिक्रीज द वर्क ऑफ ब्रीथिंग, answer should be D is the right answer. The pressure support mode will reduce your work of breathing. D is the right answer. The right answer of this question is the D is the right answer. Pressure support mode will reduce your work of breathing. D is the right answer of this question. In this question, what the question is asking you? After intubating for an elective case, you connect up the circuit and notice that you are unable to ventilate and observe high airway pressure. The next most appropriate step is to auscultate the lungs, low positive and expiratory pressure, remove the ET tube and bag mask ventilate or turn on the ventilator. So question यहाँ पे क्या पूछ रहा है? It is very important to understand first the question. Then we will go on other things. So first thing, what the question is asking you, after intubating for an elective case, you connect the circuit and notice that you are unable to ventilate. आप उसको ventilate नहीं कर पा रहे। Second thing, observe high airway pressure. Pressure बहुत high है आपके airway में। What is the next appropriate step? If you are not able to ventilate, it means something is wrong. ट्यूब आपकी कहीं ना कहीं गलत पार्ट में है। इट मे बी पॉसिबल ट्यूब इज इन द इसोफेगस, ट्यूब इज इन द GIT tract, and due to that reason you are not able to ventilate, and due to that reason you feeling a high pressure. So what will be the right condition? If you are not able to ventilate, then there will be no air in the lungs. Positive and expiratory pressure will be decreased when you having a low BP, hypotension हो रहा है तो हमें करना है, वो तो वेंटिलेटिंग पेशेंट में आपको रिक्वायर्ड होगा। रिमूव द ET ट्यूब एंड बेग एंड मास्क वेंटिलेट और टर्न ऑन द वेंटिलेटर। सो आप वेंटिलेट ही नहीं कर पा रहे तो वेंटिलेटर क्या करेगा? तो आपको टर्न ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पीप पे काम नहीं करना है, ऑस्कल्टेट नहीं करना है। हमें क्या करना है? इमीडिएटली रिमूव द ET ट्यूब एंड इमीडिएटली स्टार्ट द बेग एंड मास्क वेंटिलेशन। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
C is the right answer. Remove the ET tube and bag and mask the ventilate. आपको क्या करना है, ट्यूब को रिमूव करना है और इमीडिएटली क्या स्टार्ट करना है, बेग एंड मास्क वेंटिलेशन आपको स्टार्ट करना है.